बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम MGT के लेक्चर्स करेंगे। व्हाट दिस कोर्स इज़ अबाउट। सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि ये कोर्स किसके अबाउट है। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ buzzword these days. Everyone is talking about entrepreneurship or wants to be an entrepreneur. सबसे पहले जो इसकी डेफिनेशन है, इज़ ऑल अबाउट डूइंग योर ओन बिजनेस. Entrepreneur is a person who set up a business. जो इंटरप्रेन्योर है, इंटरप्रेन्योर का मतलब ये होता है कि कारोबार, खुद का कारोबार करना, कारोबार को फ़रोग़ देना. All state actors, government and related institutions, universities, colleges, microfinance institutions, MFIs, and many consulting firms are encouraging individuals to choosing entrepreneurial career irrespective of gender and age. यहाँ पे ये बताया गया कि गवर्नमेंट सेक्टर्स, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस वगैरह जो है वो इनकरेज करते हैं किसी भी शख्स को कि वो एंटरप्रेन्योर करियर को अपनाए, जेंडर और एज की तमीज़ किए बिना. यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं. व्हाट इफ़ ऑल ग्रेजुएट स्टूडेंट्स आर जॉब सीकर्स. व्हाट इफ़ नो वन इज़ क्रिएटिंग अ फर्म, देन who will create a job? A great source of creating jobs. Entrepreneurship is not all about doing business for profit. Rather, it is a great source of creating jobs. To create a balance between job seekers and job creators, to stimulate healthy economic growth. Who should watch this course? Though learning is not age restricted, this course of entrepreneurship is much recommended, especially to young individuals who are about to choose their career, but it is equally helpful for in-action entrepreneurs. यहाँ पे बताया गया है कि कौन शख्स हैं जो इस कोर्स को स्टडी कर सकते हैं. तो यह बताया गया कि कोई भी जो कि एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है वो इसको पढ़ सकता है. कैन यू लर्न entrepreneurship? One more interesting question, rather the most famous question. क्या कारोबार भी पढ़ के करना आता है? Now, this question has its own philosophy. We will believe that entrepreneurship is quite practical and experiential course in nature. If you are born artist or you have a business sense, still you need a mentor who can guide you for better decisions, risk-taking strategies, better and smart marketing strategies and business intelligence. अगर आप आर्टिस्ट मतलब यहाँ पे इन्होंने ये कहा कि अगर एक बच्चा किसी आर्टिस्ट के घर में आता है या आर्टिस्ट के घर पैदा होता है तो उसको नीड अ मेंटर, उसे एक मेंटर की ज़रूरत होती है. हु कैन गाइड you for better decision, risk taking strategies, better smart marketing strategies. A startup success is not a consequence of good genes or some good luck. It can be engineered by following right process, which means it can be learned and taught through an entrepreneurial process. यहाँ पे बताया गया है कि जो स्टार्टअप सक्सेस इज़ नॉट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ गुड जेन्स, ये आपको विरासती तौर पर नहीं मिलती और सम गुड लक. इट कैन बी इंजीनियर्ड बाय फॉलोइंग राइट प्रोसेस विच कैन इट बी लर्नड एंड टॉट थ्रू. ये आपको समझने और पढ़ने से मिलती है स्टार्टअप सक्सेस.
नेक्स्ट जो है यहाँ पे बताया गया, एंटरप्रेन्योरशिप इज़ नॉट ऑल अबाउट doing business for profit. It a great source of creating jobs for workforce in an economy. Entrepreneurship is not all about doing business for profit. It a great source of creating jobs for workforce in an economy. यहाँ पे बताया गया है कि नॉट ऑल अबाउट डूइंग बिजनेस, कि एंटरप्रेन्योरशिप है वो सिर्फ बिजनेस के लिए की जाती है. इट अ ग्रेट सोर्स ऑफ क्रिएटिंग जॉब्स फॉर वर्क फोर्स इन एन इकोनॉमी, या कहीं पे भी जॉब पैदा करने के लिए भी ज़रूरी है. एंटरप्रेन्योरशिप इज़ ऑल अबाउट डूइंग बिजनेस फॉर प्रॉफिट. इट अ ग्रेट सोर्स ऑफ क्रिएटिंग जॉब्स फॉर वर्क फोर्स इन एन इकोनॉमी. जो एंटरप्रेन्योरशिप है नॉट बिजनेस के लिए नहीं है, फॉर प्रॉफिट क्रिएटिंग जॉब्स फॉर वर्क फोर्स इन एन इकोनॉमी. और यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कुछ पॉइंट्स दिए. प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम. यहाँ पे बताया गया है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो प्रोसेस है फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स. एंटरप्रेन्योर इज़ द पर्सन हु इज़ अ सॉल्यूशन प्रोवाइडर. और यहाँ पे एंटरप्राइज के बारे में बताया गया, विलिंगनेस टू अंडरटेक न्यू वेंचर्स और इनिशिएटिव एंड डिस्कवर नॉन रूटीन एक्शंस इन अ डायनामिक वे. यहाँ पे इंटरप्राइज के बारे में, इंटरप्राइजिंग नेचर ऑफ मैनकाइंड इज एट लीस्ट एज ओज एट द एग्जिस्टेंस ऑफ मैनकाइंड हिमसेल्फ. इतनी पुरानी है जितने के इंसान का वजूद, या जब से इंसान बना. प्री हिस्ट्री 1000 BC में, 500 BC में, 1000 BC में एग्रीकल्चर. सबसे पहले जो इंसान जानवरों वगैरह को मार के उनका गोश्त खा के गुजारा करता था, शिकार करके. फिर यहाँ पे जो है एग्रीकल्चर का दिखाया गया. यहाँ पे जंग 500 AD में जंग लड़ने के बारे में. फिर यहाँ पे हथियार वगैरह बनाए गए. ये पहिया की 1500 में ईजाद हुई है. फिर यहाँ पे जो है मेहनत मजदूरी करके, और यहाँ पे जो है इंसान ने मुख्तलिफ ईजादात की हैं जो यहाँ पे दिखाई गई है. सबसे लास्ट पे कंप्यूटर की ईजाद की है. यहाँ पे है हंटर गैदरर्स. इन द अर्ली एजेस ऑफ एग्जिस्टेंस ह्यूमन बीइंग्स वर हंटर गैदरर्स. सबसे पहले जो है शिकार करके इंसान अपना गुजारा करता था, अपना पेट पालता था. लिविंग इन जंगल्स, जंगलात में रहता था. मूविंग अराउंड इन फैमिली, फाइटिंग अगेंस्ट नेचर फॉर सर्वाइवल, रिलायंस ऑन हंटिंग स्किल. क्योंकि वो फाइट अगेंस्ट नेचर फॉर सर्वाइवल, अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए वो अपने इर्द गिर्द के हालात से लड़ता था. ह्यूमन हंटिंग स्किल, रिलायंस ऑन हंटिंग स्किल्स, क्योंकि वो शिकार करता था और उसी पे उसका इन्हिसार था. एंटरप्राइजिंग नेचर ऑफ मैनकाइंड इज एट लीस्ट एज ओल्ड एज द एग्जिस्टेंस ऑफ मैनकाइंड हिमसेल्फ. फार्मिंग वाज, उसके बाद जो है फार्मिंग वाज द बिग इकोनॉमिक ग्रीन रेवोल्यूशन. उसके बाद इंसान ने फार्मिंग करना शुरू की. मैनकाइंड मूव फ्रॉम द एरा ऑफ हंटर गैदर टू एग्रीकल्चर सोसाइटीज़. फसल उगाना शुरू कर दी इंसानों ने. एंटरप्राइजिंग पीपल कंट्रीब्यूशंस, फायर, उसके बाद टूल मेकिंग, फूड स्टोरिंग, ट्राइब्स कबीलों में बढ़ गए और फार्मिंग करना शुरू. फार्मिंग वाज द बेस इकोनॉमिक ग्रीन रेवोल्यूशन. मैनकाइंड मूव फ्रॉम द एरा ऑफ हंटर गैदर टू एग्रीकल्चर सोसाइटीज. मर्चेंट एंटरप्रेन्योर्स, सरप्लस गुड्स ब्रॉट द आइडिया ऑफ ट्रेडिंग. द ग्रेट सिल्क रोड, ये सबसे पहला जो रोड था वो है
steam engine, the beginning of industrial revolution, era of manufacturing, era of establishment of big business units, era of craft production to mass production, क्राफ्ट प्रोडक्शन से मास प्रोडक्शन की तरफ, ट्रैवलिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, इलेक्ट्रिसिटी, एवरीथिंग यू डू टुडे इन द फ्रूट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ती गई और ये सब कुछ नई नई अजादात चीज़ें बनती गई. माइनिंग, रेल रोड्स, आयरन फैक्ट्रीज, टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज, वेपन इंडस्ट्रीज, साइंटिफिक इन्वेंशंस इजादात होती गई और नई नई चीज़ें वजूद में आती गई. UK established a committee of inquiry on small firms and first Bolton report was published in 1971 that covered the 8 important economic functions that small business perform for efficient economies. Small business and administration. Likewise, USA government also established an agency called Small Business Administration to preserve the small sector. Reasons for re-emergence of small-scale enterprises were noticed as new inventions, technological changes, और उसके बाद न्यू इंडस्ट्रियल एंड सब कॉन्ट्रैक्टिंग और डिमांड फॉर मोर सर्विसेज एंड वैरायटी. Individual customer requirements, unemployment, privatization and tax benefits offered by governments. जो फर्स्ट कंप्यूटर था वो इस तरह का था जो कि 1946 में बनाया गया था और 1954 में फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर बनाया गया था. द पर्सनल कंप्यूटर 1981 में, वर्ल्ड वाइड वेब 1989 में, सर्च इंजन रेवोल्यूशन 1993 में, 2000 में सोशल मीडिया रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गई. द इन्वेंशंस आर द प्रोडक्ट ऑफ deliberate actions of enterprising individuals to whom we can call entrepreneurs as they find solutions of our problem. Entrepreneurs जो है वो होते हैं जो हमारी प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढते हैं. कंक्लूजन. The inventions are the product of deliberate actions of enterprising individuals to whom we can call entrepreneurs. They can find solutions of our problem. Discipline is a particular area of study, especially a subject of study in a college or university. It is a branch of knowledge. Dictionary source Collins, Cambridge, Merriam-Webster, Oxford. Philosophy. यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं. फिलासफी है, आर्कियोलॉजी है, जियोग्राफी है, फिजियोलॉजी है, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, political science, social science, linguistics, mathematics. Entrepreneurship is an emerging discipline. Entrepreneurship is originated from the science of economics, but it is subfields with survival disciplines such as management, business administration, sociology, physiology, culture, marketing, finance, and geography. The term entrepreneur has been in use since 12th century when it first appeared in the French language, where enter means between and prendre means to take. These words were originally used to describe people who take on the risk between buyers and sellers, or who undertake. Entrepreneur definition जो है यहाँ पे ये बताइए. एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन who foresight and confidence operate in a condition
where the cost may be known but rewards are uncertain. Catalan, Irish, French economist, 12th century. There is a distinction between the entrepreneur and the capitalist and between their profits. Jean Baptiste से French economist and businessman 18th century में जॉन बैप्टिस्ट ने डेफिनेशन बताई थी. द एंटरप्रेन्योर इज़ अ पर्सन हु इज़ विलिंग एंड एबल to convert a new idea or invention into a successful invention. Joseph Schumpeter, an Austrian political economist from the 20th century. Schumpeter labeled entrepreneur creative destructor and directly linked it with invention. Baumol categorized entrepreneur as business organized and also an innovation person. William Jack Baumol, an American economist from the 20th century. Peter Drucker, management scientist from the 20th century, wrote a book, Innovation and Entrepreneurship, Practice and Principles. Drucker also linked entrepreneurship with innovation, product innovation, production method innovation, new market development, supply chain development, new and better structure of organization. Startup competitions and platforms. Data on entrepreneurship. Business incubation centers. Business incubation centers is a place that helps startup companies to develop and to develop and grow by providing services such as management, training, networking, mentoring, or office space. The start of any business is always challenging. Business incubator aims to meet this challenge by producing successful and financially viable firms. Virtual University has successfully established an incubation center, study startup business centers. SSBC University ने virtual university ने भी with the collaboration of Punjab Education Foundation and HEC Higher Education Center. You can find the details about SSBC इस लिंक पे क्लिक करके आप डिटेल ले सकते हैं. There are many other national and international platforms which are providing incubation services to the young entrepreneurs. National Incubation Center, the Nest, Inspire, Revolt, Microsoft Innovation Center. We create Social Innovation Lab. The Indus Entrepreneur was founded in 1992 in Silicon Valley. Is an international platform for entrepreneurs to get benefited from its eminent incubation services, mentoring, networking, education, funding, incubation. The Global Entrepreneurship Monitor is able to provide high quality information, comprehensive reports, and interesting stories which greatly enhance the understanding of the entrepreneurial phenomena. Business ecosystem. An ecosystem refers to the social, economic, political, legal, technological, market, internationalization, and related environment affecting the local, regional entrepreneurship. एक डायग्राम दी गई है जिसमें सप्लायर्स, कोर कंट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, कोर बिजनेस, और ये बाकी सारी आप देख सकते हैं. Books to read to understand entrepreneurship and business ecosystem.
The Innovator's Dilemma by Clayton Christian. The Lean Startup by Irish Rice 0 to 1 by Peter Thai. लोग कामयाब लोग हैं यहाँ पे. By Dr. Amjad. Definition: entrepreneurs are capacity and willingness to develop, organize, and manage a business venture along with any of its risks in order to make a profit. Entrepreneurial separate is separate is characterized by innovation and risk taking and is an essential part of a nation's ability to succeed in ever-changing and increasingly competitive global market. Business dictionary.com. रिस्क टेकर होता है, प्रॉफिट मेकिंग होती है, मेकर होता है. Innovation. Entrepreneurship is defined as process by which individuals pursue opportunities without regard to resources they currently control. Entrepreneurship is an art of turning an idea into a business. Springer and Ireland ने ये डेफिनेशन की थी. Entrepreneurship is a dynamic process of creating incremental wealth. The wealth is created by individuals who assume a major risk in terms of equity, time, and commitment. Provide value for some product or services. The product or services may or may not be new, but the entrepreneur must somehow infuse value by receiving and building the necessary skills and resources. As the result, receive the financial reward with personal satisfaction. Harich ने इसकी definition, what is the entrepreneurship, is defined process by which individuals pursue opportunities without regard to resources they currently control. Entrepreneurship is an art of turning an idea into a business. Doing your own business opportunity seeking resources, process, business ideas. What is entrepreneurship? Is a dynamic process of creating incremental wealth. The wealth is created by individuals who assume a major risk in terms of equity, time, and commitment to provide value for some product or services. Process incremental wealth, risk of financial or non-financial resources, commitment, innovation. ये कुछ पॉइंट्स बताए गए थे. Who is entrepreneur? An individual who takes initiative to bundle resources in an innovative way and is willing to take risk and or uncertainty to act. Entrepreneur is the one who creates a new business in the face of risk and uncertainty for the purpose of achieving profit and growth by identifying significant opportunities and assembling the necessary resources to capitalize on them. Sources: Zimmer and Scarborough. Who is an entrepreneur? Someone who exercises initiative by organizing a venture to take benefit of an opportunity and as a decision maker decides what, how, and how much of a good or service will be produced.
यहाँ पे एंटरप्रेन्योर के बारे में वो बताया गया जो किसी की भी चीज़ पे प्रैक्टिस करता है, इनिशिएटिव बाय ऑर्गेनाइजिंग या वेंचर टू मेक बेनिफिट, उससे फ़ायदा उठाता है और उसको जो मौका मिलता है उससे फ़ायदा उठाता है और लेकिन जो डिसीजन मेकर है डिसाइड करता है गुड और सर्विस विल बी प्रोड्यूस्ड, उसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं। Who is an entrepreneur? The entrepreneur is usually a sole proprietor, a partner, or the one who owns the majority of shares in an incorporated venture. According to economist Joseph Louis Schumpeter, 1883 to 1950, entrepreneurs are not necessarily motivated by profit but regarded it as a standard for measuring achievement or success. जो पाकिस्तान में कुछ एंटरप्रेन्योर्स हैं, इसमें हकीम सबसे पहला हकीम मोहम्मद सईद हमदर्द पाकिस्तान है, आफ्ताब इकबाल टिपाल्टी है, अमजद जी दाऊद आदम जी ग्रुप है, मियाँ मोहम्मद दीन सुपर एशिया, डॉक्टर अमजद साकिब अखुवत रोशन जफ़र कशफ फाउंडेशन से है, सलीम गोहरी नेटसोल से है, मोनिस रहमान rosie.pk से है। Who is entrepreneur? The famous global entrepreneurs are Henry Ford है, Walt Disney है, स्टीव जॉब्स है, बिल गेट्स है, रिचर्ड ब्रैनसम है, माइकल एस डेल है, मार्क जुकरबर्ग है, जैक मा। Who creates venture and or value? Who is a job creator? कौन है जो वैल्यू बनाता है और कौन है जो जॉब पैदा करता है? Who packs together the resources in an initiative way? Who is a risk taker? वो कौन है जो रिस्क लेता है? Who knows how to identify an opportunity and turn it into business? कौन है जो मौके से फ़ायदा उठाता है और बिजनेस बनाता है? Who is motivated and commitment? Who has enterprising nature? इकॉनमी में एंटरप्रेन्योरशिप का क्या किरदार है? द स्टेट ऑफ ए कंट्री ओरिजिन इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड द सप्लाई ऑफ मनी। द फेमस पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स मारिया बी, सना सफीनाज, मोमिना दुरैद, मोहम्मद दुरैद प्रोडक्शंस, सलीम गोहरी नेटसोल, मोनिस रहमान rosie.pk, ज़ीशान अली खान एंड इमरान अली खान, ज़मीन.com, मियाँ ज़ीशान अख्तर क्यू मोबाइल से है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डिवाइड्स इकोनॉमीज इनटू 3 कैटेगरीज, फैक्टर ड्रिवन है, एफिशिएंसी ड्रिवन है और इनोवेशन ड्रिवन है। इकोनॉमी रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमी इज अ फैक्टर ड्रिवन फेज is dominated by subsistence agriculture and extraction business with a heavy reliance on labor and natural resources. Economy is a factor driven phase. Economy is a factor driven phase is dominated by subsistence agriculture extraction business with a heavy reliance on labor and natural resources. Economy is inefficiency driven phase. Economy is efficiency driven phase become more competitive with more efficient production process and increase product quality. Economy is innovative driven phase. Economy in innovation driven phase business are more knowledge intensive and the service sector expands. Michael E. Porter wrote the book The Competitive Advantage of Nations. By entrepreneurship is at the heart of national advantage. Entrepreneurship is a huge economic impact because it is a source hub for innovation,
जॉब क्रिएशन है। Addition to national income creates social changes, size of economy, e-commerce and regional economic integration, addressing environmental changes है, social value creation है, philanthropy partners in economic development, hubs for innovation है, job creation है, addition to national economy create social changes in NGOs, non-government organizations है, अखुवत बाय डॉक्टर अमजद साकिब है, जो कर्ज हसन एजुकेशन प्रोग्राम फॉर INH यूनिवर्सिटी, साइज ऑफ इकोनॉमी, कॉमर्स एंड रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इंटरेस्ट एड्रेसिंग इन्वायरमेंटल चेंजेस, philanthropy partner in economic development, entrepreneurship as the heart of national advantage. Entrepreneurship Index and Institute's flagship project in the Global Entrepreneurship Index of the Global Entrepreneurship and Development Institute is a research organization advantage knowledge on the relationship between entrepreneurship, economic development and prosperity. Global Entrepreneurship Index measures ecosystem at the national and regional level. चाइना 2019 में ग्लोबल रैंकिंग 34, चाइना 2018 ग्लोबल रैंकिंग, ये कुछ परसेंटेजेस वगैरह बताई गई हैं। ओवरऑल स्कोर बताया गया है इनका चाइना का। स्ट्रॉन्गर एरिया ग्लोबल रैंकिंग 43 ऑफ 37, वीकेस्ट एरिया प्रोडक्ट इनोवेशन, रिस्क कैप, अपॉर्चुनिटी परसेप्शन। Global Entrepreneurship Index Entrepreneurship measures ecosystem at a national and regional level. Iran 2019 global ranking 64, Iran 2018 global ranking, Iran overall GEI score global ranking 72 of 137, strongest area, weakest area, और इसकी कुछ परसेंटेज दी गई हैं, आप इससे पढ़ सकते हैं। पाकिस्तान 2019 global ranking 109, 2018 global ranking 120 of 137, वीकेस्ट एरियाज बताए गए हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट एरियाज बताए गए हैं यहाँ पे। ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप इंडेक्स अपॉर्चुनिटी परसेप्शन है, अपॉर्चुनिटी रिकॉग्निशन है, फ्रीडम इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स है, स्टार्टअप स्किल्स हैं, एजुकेशन टेरिटरी एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, रिस्क एक्सेप्शन है, रिस्क परसेप्शन है, कंट्री रिस्क है। ये कुछ पिलर्स बताए गए हैं वेरिएबल्स के ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप इंडेक्स में, आप इनमें कर सकते हैं। रीजनल रिजल्ट्स एशिया पैसिफिक 2018 में 2018 में यहाँ पे इसके कुछ पॉइंट बताए गए हैं। रीजनल रिजल्ट एशिया नॉर्थ अमेरिका 2018 में इसकी बताए गए हैं। यूनाइटेड स्टेट में 84 है, कनाडा में 79 है, मैक्सिको में 26 है। डिसीजन टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, creativity doesn't fit the corporate environment. They want a lifestyle that isn't bound to 9 to 5. वो एक ऐसा लाइफस्टाइल चाहते हैं जो उन्हें 9 to 5 काम ना करना पे भी देर ऑन बॉस, और वो खुद के बॉस खुद बनना चाहते हैं। दे आर एक्टिव लर्नर्स, रीजन्स टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, किस वजह से लोग बॉस बनना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। दे वांट टू बी परस्यू देयर ओन आइडियाज़, देयर आइडियाज़ आर अनकन्वेंशनल एंड वेरी इनोवेटिव, दे assume that there are unlimited earning possibilities,
we can change the world. Entrepreneurs are never retired from their work. They want to pursue their own ideas. Entrepreneurs do not require degrees. उन्हें डिग्री की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने बॉस खुद होते हैं और उन्हें वो अपनी जॉब से रिटायर नहीं होते, वो अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं. ब्रिंग्स ऑटोनॉमी, फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंटरप्रेन्योरशिप ब्रिंग्स अ सेंस ऑफ अचीवमेंट. कॉमन माइथ्स. सबसे पहली माइथ जो है, एंटरप्रेन्योर्स आर बोर्न एंड दे कैन नॉट बी मेड. जीन्स है, जीन से कुछ सीखते हैं. इंडिविजुअल डिफरेंस है. इन्वायरमेंट है. एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी है. एंटरप्रेन्योर्स आर वेरी हाई रिस्क टेकर्स हैं, रिस्क टेकर्स होते हैं. और कॉमन माइथ नंबर 3, एंटरप्रेन्योर्स आर प्राइमरली मोटिवेटेड बाय मनी. वो मनी से मोटिवेट होते हैं. एंटरप्रेन्योर्स आर ओवरवेल्म्ड बाय देयर ओन आइडियाज़ एंड डू नॉट लिसन टू देयर एडवाइसेस. वो किसी के भी एडवाइस को नहीं सुनते. एंटरप्रेन्योर्स आर हाई टेक विजर्ड्स. एंटरप्रेन्योर्स लव द स्पॉटलाइट. ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप कर सकते हैं. कॉमन माइथ, एंटरप्रेन्योर्स आर मस्ट बी इन्वेंटर्स बिकम दे आर इनोवेटर्स. कॉमन माइथ, वी डोंट नीड टू अर्न डिग्री इफ़ यू आर वांट टू बी नीड टू अर्न डिग्री. अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, इफ़ यू डोंट हैव मनी you can't be an entrepreneur. Entrepreneurship is a pursuit of opportunity beyond the resources you currently control. Usually young, super genius and super energetic kind of a hero.